सो कहाँ पे थे हम लास्ट क्लास में? पोजीशन मैनेजमेंट। यस, पोजीशन मैनेजमेंट। इससे पहले भी क्लास किए थे बट सिस्टम चेंज हो गया था ना, तो Yes, अगेन right. वी हैव द रिकैप राइट फॉर ऑल द Hmm. स्ट्रक्चर। सो लेट मी जस्ट ओपन द सिस्टम। एक्सेस तो मिल गया ना आपको, सिस्टम चल तो रहा है ना? हाँ, एक्सेस क्या है एक्सेस आपका? मिल गया है सर। डेमो 5 है, 4 है? 5। 5। ओके। सो वैसे ये न्यू एक्सेस में सबको डेमो ही दिया हुआ है, उस क्रिएट हाँ, करके। डेमो ही दिया है। क्या वो पहले अलग था। पहले मेरा मेरा अलग था, जैसा कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के उस पे ही मैं रीसेट करके यूज करता था, बट ट्रेनर को भी डेमो ही एक्सेस दिया उसने पूरा कंप्लीट। ओके। तो तो मैनेज पोजीशंस में, पोजीशंस अगर आपको क्रिएट करना है तो कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हो? हाउ मेनी वेज ऑफ क्रिएटिंग अ पोजीशन? दिस इज आल्सो इंटरव्यू क्वेश्चन। व्हाट आर द वेज टू क्रिएट पोजीशन? एक तो पोजीशन इज एन एमडीएफ ऑब्जेक्ट, वो ओके। मैनेज डाटा से हो जाएगा। ओके, इफ यू ओके। जस्ट गो टू मैनेज डाटा, देन यू कैन जस्ट क्रिएट न्यू। इधर काफी चीज है, तो आपको पोजीशन सर्च करके क्रिएट करना पड़ेगा। और दूसरा मैंने बताया था, क्या था वो लास्ट? सिर्फ पोजीशन के लिए बना है वो, मैनेज पोजीशन, राइट? यस। दिस इज द वे वे यू विल बी क्रिएटिंग द पोजीशन। और तीसरा भी वे है, बट इन केस अगर आपको शॉर्टकट में पोजीशन क्रिएट करना है, इफ यू नो द पेरेंट पोजीशन बेसिकली किसकी किसी के अंडर आता है या नॉट, ओके, हु शुड द पोजीशन रिपोर्ट टू, आपको इतना सारा डिटेल्स मेंशन नहीं करना है, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू ऑर्ग चार्ट। ये मैं स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में बताया था, इफ यू रिमेम्बर। हाँ। सो यहाँ पे पोजीशन ऑर्ग चार्ट है। ये इधर थोड़ा लाइट हो गया है, ये किसी ने छेड़खानी की है टीम के साथ, लेकिन फिर भी विजिबल है, यू क्लियरली ऑब्जर्व इट। यस। ये यस। पोजीशन ऑफ चार्ट है। तो यहाँ पे सॉरी, नो पोजीशन फाउंड, तो कोई ना कोई पोजीशन को देख लो। सो ये पोजीशन है, या कोई वीपी का पोजीशन ले लो, अगर किसी के अंडर है तो। ज्यादातर रिपोर्टिंग मैनेजर्स वीपी ही रहते हैं। सो एम्प्लॉय रिलेशन वीपी, यहाँ पे इतने पोजीशंस रिपोर्ट कर रहे हैं। तो if you want this position to report here, so इधर ऑप्शन है आपको add peer level position, मतलब ये इसके लेवल का पोजीशन होगा। कॉपी पोजीशन मतलब सेम पोजीशन कॉपी होगा। add lower level position, अगर आपको इसके अंडर पोजीशन क्रिएट करना है तो this। and again I have told that it is worked on certain fields are getting defaulted, which is nothing but propagation rule। ये मैं business rules में बताऊंगा। I have explained this propagation rule based on selecting the, just clicking that position, this is the rule which is basically लॉजिक कैसा लिखते हैं हम? जो सुपरवाइजर की कंपनी है वही ये एम्प्लॉय की कंपनी होनी चाहिए, रिपोर्टियर की कंपनी होनी चाहिए, ऐसी लॉजिक लिखते हैं। ये नॉर्मल टर्म में बता रहा हूँ, बट writing of a rule is an art that which I'll be explaining in later classes when we'll be covering business rules after every data model is completed। okay ओके। ओके। तो लॉजिक ऐसे ही देते हैं, मतलब जस्ट इन सिंपल टर्म्स, अगर सुपरवाइजर हाउस टू मेक सिस्टम अंडरस्टैंड कि यही कंपनी है, बिकॉज वी टेल द सिस्टम इन लॉजिक इन नॉर्मल टर्म्स। मैं बता रहा हूँ कि इफ सुपरवाइजर कंपनी इज बेस्ट फ्रेंड कंपनी, लेट्स द रिपोर्टिंग कंपनी आल्सो बी द सेम एज सुपरवाइजर बेस्ट एंड कंपनी। यस, राइट। कंपनी, सेम एज सुपरवाइजर कंपनी, ऐसा लॉजिक प्रिपेयर करते हैं हम लोग। That is the reason system can able to view it। कहीं ना कहीं से लॉजिक देना पड़ता है, right, in rules। So that I will be explaining it। So this is the third way of creating the position। इसमें से भी आपको आई थिंक सर्टिफिकेशन में कुछ क्वेश्चंस आए थे पोजीशन ऑफ चार्ट से, बिकॉज इसमें से एक दो क्वेश्चंस 100% आते हैं आपको। लाइक फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स पोजीशन कैसा देखते हैं, या ऐसा पूछा होगा कि पोजीशन ऑफ चार्ट में क्या क्या ऑप्शंस है, ऐड लोअर लेवल पोजीशन, पीयर लेवल कॉपी पोजीशन, ऐड अपर लेवल पोजीशन भी पूछा होगा, जो कि रॉन्ग है, बिकॉज सर्टिफिकेशन का ये इसमें से एक आध क्वेश्चन कैसा भी आता है सर्टिफिकेशन। ओके, इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि
क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं पोजीशन ऑफ चैट से, आप पोजीशंस क्या क्या क्रिएट कर सकते हो, अपर लेवल वालों का पोजीशन क्रिएट कर सकते हो क्या? देन यू हैव टू से नो, इधर कोई ऑप्शन नहीं है अपर लेवल बोल के, यू कैन ओनली क्रिएट लोअर लेवल पोजीशन। अगर Yes. सपोज सपोज ये इसके ऊपर ऊपर का पोजीशन मेरे को क्रिएट करना है तो मैं वन लेवल अप करूंगा, वो किसको रिपोर्ट कर रहा है, इसको रिपोर्ट कर रहा है, तो मैं एट Ye- पीएल लेवल पोजीशन करूंगा, तब तब वो अपने आप उसको रिपोर्ट करेगा। एट पीएल लेवल पोजीशन बोल तो अपने आप इसको रिपोर्ट करेगा। ये जो भी है यू कैन इनके ऊपर ये आता है तो इसके साइड में एनीवेज इट विल नॉट डायरेक्टली रिपोर्टिंग अगेन, यू हैव टू चेंज इट, बट इनके ऊपर अगर मेरे को पोजीशन ऐड करना है किसी का तो मैं इधर इधर ऊपर वन लेवल अप करके पोजीशन क्रिएट करके देन आई विल बी लिंकिंग देम इफ आई वांट, नहीं तो ये इसी को रिपोर्ट करेंगे। ओके, दैट्स Okay. you can understand easily, master data है वो तो। So just for now, just understand that there are three ways to create a position. One is manage data. Position is an MDF object. Okay, so manage data, and then and one more thing, all the structures, org pay and job structures जो भी अब तक हम लोग ने बनाया है, XML and all that are linked to the position only. Here ये Okay. इधर तो ऑफ स्ट्रक्चर्स लिंक होता है, एंड देन समवेयर यू कैन फाइंड द पे ग्रेड, इधर पे ये पे स्ट्रक्चर में आएगा पे ग्रेड। ओके, जॉब क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट जॉब स्ट्रक्चर विच इज जॉब कोड। हो गया ना, तीन स्ट्रक्चर्स इधर Hmm. ही रिलेट होता है ना। सो just for creating a position we have to create the all the structures. So when you hire an employee and you select the position, all will get defaulted because of this. One is this, will be mentioning this company कौन सी है, position की है और job title कौन सा है, एक तो ये, और दूसरा propagation rule। अगर ये सही है, propagation rule you have not kept, then it will not get defaulted. Propagation rule means I have told you, based on one field selection, other field will get defaulted. Okay, got it? Yes. Yes. So let us create our position. क्या था अपना, ITC था ना, ITC. ITC. So सबसे पहले वाई पोजीशन कोड इज, ये तो मैं वैसे भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन this is not editable because it is Permission. नहीं, परमिशन का लेना देना नहीं है इससे। एनीवेज फील्ड वाइज परमिशंस तो रहता है, ये एडिटेबल नहीं है बोल तो बिकॉज अंडर कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन एक चीज तो फर्स्ट थिंग इज जस्ट अंडरस्टैंड इट, Hmm. फर्स्ट थिंग इज अंडर कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन because MDF object position is also an MDF object, कहीं ना कहीं तो कॉन्फ़िगर करना है ना। So you have to हाँ. go to configure object definition and search for position. This is the standard MDF object. It comes in standard MDF object like other org layers, legal entity वो सब है ना, वैसे standard है। So under this, first thing is code. Code is what we are saying here. Visibility is read only. Okay. Read only. Yes. Yes, it will not edit. Or second thing, under this you are assigning a rule basically. Under that rule, save rule में once you save this position, once you save this position under this rule, the set position external code, इसमें अगर आप जाओगे तो ये स्टैंडर्ड रूल है। तो क्या लिखा हुआ है रूल में, द पोजीशन इज इक्वल टू ऑटोमेटिक and or the position is code is equal to null. Okay, any one of the criteria met, now it is equal to null basically। यहाँ पे automatic बोल के लिखा नहीं है कुछ, if is equal to null means empty, then we are assigning this rule. This is the standard rule, set position rule, ये मैं बता चुका हूँ। format number text percentage d मतलब digits, get next value Digits. कहाँ से ले रहा है वो, ये कोड से ले रहा है।
set position. This is the sequence. Sequence is an MDF object. Just try to link it basically. कहाँ से ले रहा है? Sequence is also another MDF object जो कि अगर मैं not here manage data, MDF object के values कहाँ पे अपडेट करते हैं? Manage data ना? If I select here, already created sequence है ये. If I select here sequence, then copy and paste this sequence over here. ये पोजीशन हो रहा है, तो ये नंबर अभी राइट नाउ नंबर 22 चल रहा है, मतलब करंट नंबर 22 चल रहा है, मतलब 22 लेगा वो, फिर 22 23 से लेगा। ये स्टेप 1 मतलब ये इधर से शुरू हुआ था नंबर, ओके 924, फिर 925, 926, स्टेप 1। अगर स्टेप में 2 लिखोगे आप सीक्वेंस में, तो ये एक नंबर स्किप करके दूसरा नंबर लेगा, 924 के बाद 925 स्किप करके 926 लेगा। तो वेदर यू वांट स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, मतलब 3 नंबर स्किप कर देगा। ओके, स्टेप 1 मतलब सीक्वेंस से आएगा। ऑल टाइम सेलेक्ट स्टेप 1 ओनली until and unless required that it should take alternate number, then you can mention step 2. This is sequence. Okay, अब ये नंबर चल रहा है। now if I go here position org chart में, I want to copy this position, so मैं क्या करूंगा, I'll be going here and copy position to be hired. The following positions were created: 300 1022, 300 1022, समझ में आया? अब Yes. I am refreshing this. अब क्या हो गया? बढ़ गया ना, अब 23 से लेगा वो, ऐसा ये दिस इज एक्टिंग ऑटोमेटिकली। सो ये सीक्वेंस, चाहे तो आप अपना खुद का सीक्वेंस क्रिएट करके, कुछ नहीं करना है आपको, बस इधर जाके ये डब्बा को क्लिक करके यहाँ पे जाके अपना वो सीक्वेंस लगा देना। ओके, एनी नंबर सीक्वेंस लाइक 4 सीरीज, 5 सीरीज, व्हाटएवर यू वांट। नाउ ये टेम्पलेट में परसेंटेज डी इज डिजिट। नाउ अब मुझे क्या करना है, समटाइम्स Amazon हो गया कंपनी, ITC हो गया, आई विल बी स्टार्टिंग माय नंबर रेंज विथ ये परसेंटेज डी तो इधर से लेगा, अब उसके आगे मुझे ITC लगाना है। तो जो इधर ले रहा है ना ये, when I create any position, it will start taking ITC 3000 means 300 1022. So अगर मुझे इसके आगे ITC लगाना है, okay, just try to understand the logic. I am just keeping the ITC and then I am saving this. Okay, you can just play it around, not a problem. Then if I just refresh it, अब सपोज मुझे यही पोजीशन को एक बार कॉपी करना है, 1, ओके, गॉट इट, ITC 3300 ओके। अब ये नंबर सीक्वेंस में से ये 300 से सीक्वेंस में आ रहा है, सीक्वेंस से ले रहा है। ये ITC कहाँ से ले रहा है? रूल से ले रहा है, which we have configured. this rule, टेम्पलेट का जो रूल है ना, इधर से लेता है। ओके, likewise you can just mention ITC means अगर मुझे ITC के आगे नंबर रेंजेस लगाना है, होता है ना थोड़े कंपनीज में, they want that ITC number 001, ITC 002. okay, so likewise for that purpose you can just mention these number ranges from so and so. so ये हो गया इधर। अब समझ में ये कहाँ से ले रहा है? position code. It is taking from rule, and under that rule number is assigned. Now then you will be having start date. अब मैं start date कब लूंगा? Mention all things from January 1900. Yeah, so ज्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं पड़ेगी, anytime it will take, because 1900 से तो ऊपर कुछ होगा नहीं। so अपना जॉब कुछ क्रिएट किए थे हम लोग, ITC का कुछ जॉब कोड बनाए थे शायद ना? ITC का जॉब कोड नहीं बनाया था आई थिंक सर।
जॉब कोड नहीं बनाया था अपन लास्ट क्लास में? मेरे को जहां तक ख्याल है डायरेक्टर बोल के बनाए थे कुछ। डिवीजन सब डिवीजन वो सब बनाया था सर हम लोगों ने। जॉब जॉब क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन टीसी डायरेक्टर बनाए थे क्या कुछ, जहां तक ये अपन ही बनाए थे क्या डायरेक्टर? नहीं, वो नहीं बनाया था हम लोगों ने। कोई नहीं। फॉर क्रिएटिंग अ न्यू जॉब क्लासिफिकेशन, ये तो पता है ना, यू कैन हम्म, जस्ट मेंशन। ये ऑटोमेटिक इधर से ले रहा है। इन कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन दे somebody has assigned this initialization rule, उधर ऑटोमेटिक दिया हुआ है। यू कैन जस्ट डू R&D, जो भी है कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन से ही रहेगा। ओके, ओके। सो इफ आई जस्ट डू दिस, यहाँ पे रूल्स में इनिशियलाइज रूल्स में देखो ये क्या बोल रहा है, इधर भी रूल्स है। इनिशियलाइज रूल्स में अगर जॉब क्लासिफिकेशन में जॉब कोड इज नॉट इक्वल टू नल, इज इक्वल टू नल मतलब एम्प्टी है, देन जॉब एम्प्टी क्लासिफिकेशन जॉब कोड इज ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। दैट्स द रीजन इट इज showing automatic. So in order to not the user change that, so you can even do this as read only field. कहाँ पे है कोड, है ना, कोड कहीं तो होगा फील्ड में, ये कुछ ज्यादा ही ऊपर चलेगा। एक्सटर्नल कोड में दिस फील्ड, it is editable, right? Make it as read only, so the user will not disturb it. And ये एक है, और फिर सेव रूल्स में से ये सीक्वेंस ले रहा है। ओके, ओके। सेम एज पोजीशन, बट यहाँ पे क्या है, whenever you apart of position any MDF ऑब्जेक्ट आप सीक्वेंस क्रिएट कर रहे हो, तो जो सो ऑटोमेटिक रखना उसको, क्योंकि ये मैंडेटरी है ना, तो सेव होने से पहले ये मैंडेटरी है, इट इज ऑल फिल ऑल मैंडेटरी फील्ड्स बोल के बताएगा वो। पोजीशन में नहीं बताएगा वो, मैं पोजीशन मैनेजमेंट सेटिंग से कंट्रोल है, वो मैं आपको तब बताऊंगा पोजीशन मैनेजमेंट सेटिंग से। ओके, बट अपार्ट ऑफ व्हेन यू आर mentioning any job code over here, so this also you can do certain changes like अगर मैं ये गया, जस्ट प्रैक्टिस, अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बट you हाँ, have थोड़ा to, सा लगता है सर, बट वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। यस प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो हम्म, इधर मैं, ये पहला रूल तो ऑटोमेटिक का है, एनीथिंग शुड बी मेंशन बिकॉज इट इज अ मैंडेटरी थिंग जॉब कोड, सो ऑटोमेटिक मेंशन किए। अब सेव होने के बाद ये रूल एप्लीकेबल होगा, कौन सा, ये वाला। इधर मैं ARP ये आपने लिखा है। ARP बोल के यस। डाला ना, इसलिए वो ARP पे ले रहा है। ARP की जगह आप ITC डाल दो। ओके, ओके। ITC, तो वो सेम परसेंटेज डिजिट, मतलब ये जाके चेक करो, ये जो कोड का रेंज होगा ना उधर से ही लेगा, जैसा हम पोजीशन का चेक किए थे ना। इसमें खाली बस एक चीज क्या करनी है आपको, दो रूल्स लिखने पड़ेंगे। एक तो वो वेकेंट नहीं रहना ये फील्ड, तो समथिंग ऑटोमेटिक बोल के ओके। मेंशन करते हैं। इसको सेव करने के बाद वो ARP या ITC का जो नंबर रेंज है ना वो रहता है। सो टू रूल्स आर टू बी असाइंड ओवर हियर, सो लेट अस जस्ट create it from 1900। सो जॉब टाइटल हम लोग मेंशन करेंगे ITC। व्हाट विल बी द जॉब टाइटल, ITC डायरेक्टर। ओके, डायरेक्टर। यस। ये सब ऑप्शनल है, मैंडेटरी फील्ड कर दो। ये सब तो इधर से ही कंट्रोल होता है कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन से। इफ यू डोंट वांट दीज मेनी फील्ड्स, यू कैन इवन हाइड इट आल्सो। जॉब लेवल अगर कुछ है, ये तो पिक लिस्ट है,
बिकॉज आई एम एक्सपीरियंस्ड, आई कैन एबल टू सी पिक लिस्ट। अगर आपको फिर भी कंफ्यूज है ना, इधर जाके फील्ड में से चेक कर लो, इट विल बी पिक लिस्ट। ओके, ओके यहाँ से आपको जॉब लेवल जो भी रहेगा, यहाँ से पिक लिस्ट रहेगा डाटा टाइप में। ओके, ओके सो रेगुलर दिस दिस फील्ड्स आर इम्पोर्टेंट, प्रोपोगेशन के टाइम पे काम आएगा। प्रोपोगेशन फील्ड में हम लोग कंपेयर करते हैं, फिर जॉब क्लास का, फिर सिस्टम को बोलते हैं पोजीशन में भी रेगुलर टेम्पररी रहेगा, तो हम लोग डिफॉल्ट कैसा करते हैं, लॉजिक ऐसा देते हैं, अगर जॉब क्लासिफिकेशन में जो रेगुलर टेम्पररी है दैट शुड बी पोजीशन रेगुलर टेम्पररी। सो सिस्टम वहां से उठाता है प्रोपोगेशन रूल, समवेयर यू हैव टू सेट अप द लॉजिक, राइट। सो ये फील्ड्स मैंडेटरी आपको भरना पड़ेगा। एम्प्लॉय क्लास एक्टिव, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो जॉब क्लासिफिकेशन का एम्प्लॉय क्लास है that should be position employee class. So whenever you select the job code here in manage position, any job code, it will get some values get defaulted, job title, ये वो। ये डिफॉल्ट कहाँ से होता है, पे ग्रेड, एम्प्लॉय क्लास, ये डिफॉल्ट इधर से होता है, जॉब क्लासिफिकेशन में भी मेंटेन करना पड़ेगा आपको। ओके, so ओके इधर से वो लिंक होता है। So when you are working on propagation rules, so make sure you maintain these things, important things, जैसा फुल टाइम एम्प्लॉय है, यस, सुपर, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको कुछ भी काम नहीं आएगा, सुपरवाइजर लेवल एंड ऑल, इफ यू वांट टू मेंशन यू कैन मेंशन दैट। ओके, सो सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव, पे ग्रेड है, पे ग्रेड है, तो ये डिफॉल्ट हो गया, दिस इज इम्पोर्टेंट। पे ग्रेड क्या रहेगा, बेसिकली 10 10 डायरेक्टर का सपोज सैलरी ग्रेड 10 है, तो वो यहाँ से लेगा पे ग्रेड, ये अपने आप डिफॉल्ट हो गया ना, ये इधर हाँ जॉब क्लासिफिकेशन से लेगा। इफ यू जस्ट ओपन दिस, ये जॉब क्लासिफिकेशन की डिटेल्स है, गॉट इट, कहाँ से कहाँ लिंक होता है। ओके, सो जॉब फंक्शन वैसे और एल्स डायरेक्टर ही मेंशन कर दो, जॉब फंक्शन की जरूरत नहीं है, इन केस इट इज डिपेंडिंग ऑन द मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट, क्या वो लोग क्या करेंगे, इट इज एज इक्वल टू एज जॉब क्लासिफिकेशन ओनली, जस्ट ब्रॉडर सेंस समझो। मैनेजर्स डायरेक्टर्स एक फंक्शन में आते हैं, देन वी आर मेंशनिंग दिस जॉब फंक्शन, फिर इसके अंडर आपको जॉब क्लासिफिकेशन इज मैनेजर और सीनियर मैनेजर, दैट यू कैन अपडेट इट। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, गॉट इट। सो मैनेजमेंट से आपको वर्क करना पड़ेगा क्या है, ये सब custom fields है, you don't have to focus on that, in case requirement is there you can just mention this। अब ये जॉब क्लासिफिकेशन कंट्री अपना इंडिया यहाँ पे नहीं है, इफ यू सी देयर इज नो इंडिया, बिकॉज मैं कंट्री अपना पुराना सिस्टम में मैं आपको बताया था ना, हाउ you you should create when we'll be covering country specific MDF object, right, parent to child, that यस then you have to create the job classification child object from mentioning from parent India, then you have to link it under this job classification country region बोल के एक अलग MDF ऑब्जेक्ट है, उसमें जाके आपको लिंक करना है, लाइक 1 to 1 बोल के लिंक करके, और 1 to many एनीथिंग लिंक करके कॉम्पोजिट देना है। I have told you, explain you. You can watch my previous videos and you can try the same way. Okay, it will work around. ओके So this is not a mandatory thing. Then I will be just saving it. Just let us check what is this. Now I'm just saving it. So this is updated. Up here, if I go to manage position, again I need to refresh it because it will not appear it. Success factors का वही है, whenever changes are there, you have to refresh it. Okay. Now again, I'm just mentioning this. So job code, ITC लिखे थे ना, आ गया ITC डायरेक्टर। ऐसे डायरेक्टर यस Yes, this change reason, change reason why it is not coming, because date का कुछ पंगा होगा। किधर है change reason?
पिक लिस्ट है वैसे चेंज रीजन we are looking into position object, right? Let's go to position object. Because हम लोग डेट 1900 का लिए ना, तो चेंज रीजन वो इफेक्टिव डेट पे रहेगा या नहीं रहेगा डाउट है. सो चेंज रीजन पिक लिस्ट है. पिक लिस्ट कौन से डेट से इफेक्टिव है दैट यू हैव टू चेक. यहाँ पे कॉपी करके पिक लिस्ट को, पिक लिस्ट सेंटर है ना. So if you know, if you have practical hands-on experience, then अपने आप हाथ चलेंगे आपका, नहीं तो कंफ्यूज बहुत होते हो. नाइनटीन 1990 से इफेक्टिव है चेंज रीजन. Either you can make this effective 1900, नहीं तो 1990. ज्यादा फर्क नहीं है. You have to go here and make it effective from 1990. समझ में आया? Yes. ये भी एक इम्पोर्टेंट वो है इंटरव्यू क्वेश्चन या सर्टिफिकेशन क्वेश्चन बोलो. वो पूछेगा, सर्टेन सिनेरियो देगा. अगर मैं अगर चेंज रीजन, अगर मैं नॉट ओनली एनी ऑब्जेक्ट 1900 1 जनवरी से करना चाह रहा हूँ, बट उससे एसोसिएशन एनीथिंग इज created in 1990 or 2000, will it get valid, will you can able to see the details बोल के ऐसा scenario basis पे पूछेगा. then you have to manage those questions as well. okay Okay. so मैं इधर 1 जनवरी 1990 लेता हूँ. now let us check. आ गया. Yes. न्यू पोजीशन जैसे मैं अपडेट किया, जस्ट observe it. ये पोजीशन टाइप रेगुलर पोजीशन, FTE1 and all, नॉन क्रिटिकल, ये सब आ गया. दिस इज ऑल्सो प्रोपोगेशन रूल. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज दैट रूल. बिजनेस रूल्स मींस ओवरऑल प्रोपोगेशन रूल्स आई विल एक्सप्लेन यू. सो ये यहाँ से लेता है, बेसिकली लॉजिक पे लेता है ये रूल्स. बिजनेस रूल्स आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो actual what employee can see the position title is this new position code title. Either you can copy and paste this over here or अपने हिसाब से कर दो. HR ITC director HR. okay Okay. it is applicable. now position description is optional अगर कुछ description करना चाहे. and here position type regular position, shared position. I have told you what is regular position and shared position. अगर कोई अगर if one person is allotted only one position, then you can't share it. You have to mention regular. FT will be 1. At that time mass position will be no. okay and अगर mass positions आपको करना है, then first you have to mention this FTE. it will be more than 120. जैसा कोई plumber है, carpenter है, you can able to change this, and at that time mass position yes करना है. okay Okay. and then critical position is non-critical. ये तो propagation rules है. critical, if you are mentioning any position as critical, then that means if any critical position, director है, board of director है, जिसका decision making में ज्यादा role है, if the position have that impact, if he suddenly resigns or suddenly leaves, impact the organization, then those positions are called as critical positions. You have to mention for those positions. yes, manually आके इधर change करना है critical, नहीं तो rule के हिसाब से ये no critical हो जाएगा as of now in the system. okay if you want it vice versa, फिर rule को change कर दो. critical के जगह non critical के जगह critical mention कर दो propagation rule में. okay the rules I will be explaining. But generally critical positions will be very less. Normal positions will be non-critical only. So we'll be mentioning that rule as non-critical. And then position incumbent will be not touching this.
those who occupy this position, his or her name will be appear over here. Generally, these positions are not, because either we can run a hire action and assign the position, or change action and assign the position, will be not manually interrupting over here. Okay. Okay. Parent position is nothing but the supervisor position. For example, इसका कुछ parent position है, तो जैसा I'll be selecting any VP को report करता है या anything, for example employee relation VP, तो ये पोजीशन अपने आप आपको जॉब इन्फो में दिखाई देगा। एम्प्लॉय फाइल में जो पोर्टलेट्स होते हैं ना, मी एम्प्लॉयमेंट कॉम्पेंसेशन बोल के पोर्टलेट्स होते हैं ना अलग अलग, हाँ सर, यस यस। आपको सुपरवाइजर पोजीशन में अपने आप दिखाई देगा। दिस अगेन कंट्रोल्ड बाय पोजीशन मैनेजमेंट सेटिंग्स। ये कहाँ से कंट्रोल होता है? पोजीशन मैनेजमेंट सेटिंग्स, जो कि अपना अगला टॉपिक है, दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन दैट। ओके, सो फिलहाल अभी आप इधर करते हो तो वो अपने आप इंटीग्रेट होता है, सिंक होता है पोजीशन बेसिकली। ओके, so to be had always be yes, means here will be not interrupting with propagation rule. When you are selecting a new position over here, it will automatically propagate to yes, because to be had matlab it is vacant position when you are creating position for the first time. But in case the position is occupied later, it will get no automatically. We will not interrupt anything with this. Okay, in case in quality if you find any filled position as still to be had yes, then you can manually mention it to no in case you find such cases. But generally it will automatically turn to no when the position is filled with any employee. Okay, Okay. and then employee class is, I told you, active. This is also a pick list basically, which we also saw in job classification also. Yes, yes, pay grade, job level, these all will also call found in job classification, regular, temporary, etc. Comment. Source of creation. What is the source of creation? For example, Means, from where you come to know about the job related information? source of creation. For example, if you are creating any position here in position of chart basically. Okay. Suppose I'm copying this same position, I will be copying. Yeah, I have copied this position, right? I think Yes. I've copied any position from here. This position I've copied, or some position, or let me Yeah, just copy this consultant. position. Again, copy position 1, set to be had, yes, okay. Then this position is there, ITC. Just copy this position. And then don't disturb this. Let me just duplicate this and mention the position over here. तो यहाँ पे क्या आएगा? मास कॉपी फ्रॉम पोजीशन ऑफ चार्ट। सो जहां से आप क्रिएट करते हो पोजीशन, वो अपने आप इधर दिखाई देगा आपको। ओके, समझ में? सो विल बी नॉट मैनुअली इंटरप्टिंग दैट फील्ड। सो दैट्स द रीजन इट इज नॉट एडिटेबल। Okay. रिक्रूटर मतलब वो ये पोजीशन का कौन रिक्रूटर है, दिस इज ऑप्शनल बेसिकली। अगर इट इज बेस्ड ऑन यूजर, अगर मैं आन्या सिंह लिया तो रिक्रूटर विल बी आन्या या नंदिनी, सो वेंकटेश। सो वो अपने आप इधर आपको नाम से आ जाएगा यूजर नेम, मींस हु इज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ओनली। ओके, Okay. so this is what the thing that the position is there, main important things in position. Let me just save this. ITC से आ गया ना position code. Yes. So ये सब important चीजें हैं. These are called based on company, फिर business unit आना, division आना, department आना, location. These are controlled by field criteria, and you can assign the position to company, business unit. So that propagation में when you are hiring and selecting that position, all these fields will get automatically propagated. That is propagation rule. Okay.
पोजीशन मैनेजमेंट सेटिंग्स में मैं वैसे भी एक्सप्लेन करूंगा. सो ये organization section basically I'll be explaining in tomorrow's class. This is very interesting. Field criteria, what we'll be calling as field criteria. Okay. Okay. ठीक है. Till then, just practice this. What else we have covered, then we'll be moving forward. Means tomorrow we'll be moving further into this. Okay. Okay, sir. Okay Okay. then. All right. Bye, sir. Bye.